Okay, I am presenting it back. Not sure. This meeting is supposed to be set for 1 hour 10 minutes, but then it is getting closed after every 5 minutes. Okay, I'll check with those people. Okay, so I'm presenting my screen once again. Hopefully, we are not ending the session again. Okay, so Sachin, are you able to write that statement into your databases? Yes, yes. Yes. Okay. So now once you refresh this on the left hand side, you should find a database with the name test database. So let's find it out. Okay. Okay. So on the left hand side, can you see this is like a glass, like a icon. Okay. The glass is completely filled. This icon is nothing but it specifies the database icon. Okay. So this is created. Okay, now once this is created, how did I search it? First, again, I'll tell you. You need to refresh this. What have we created? We have created a database with the name test database. So where will I go and search? We don't need to worry about the remaining options. These are all the advanced options: server objects, replication, polybase. This is not required to us. We will only be dealing with the very first option, which says databases. Now if I expand this, see, this is the option to expand and collapse. Okay, when I'm clicking on this addition sign, I'm expanding it. Okay, so I don't need to go into system databases, database snapshot. The moment you fire this query on the under the databases, you can see the list of databases. Out of that, which is my recent database, a test database. Now I can again expand it. So what is the icon for database? Just a glass which looks like a filled one, a filled glass. Okay, so this is the icon. Now I can expand it. Now after expansion, again I don't need to worry for any of the options here. Which option we are going to deal with? We are going to deal with tables. Okay, so if I go under the tables, there are no tables created. Okay, so see, system tables, file table, external table, graph table. Again, we do not need to bother for this. This is all taken care by the SQL Server developer, actual developer. Who are we? We are Power BI developers. But just because Power BI needs the data which is structured, that is why we are learning little bit about Excel and your SQL Server. Who is mainly going to deal with the SQL Server, Oracle Server? The developers of that particular tool. So what we need to do is, once the databases is created, we need to add the tables. We need to add the table in the form of rows and columns. So what is the second syntax here? I can again navigate back to my Excel. See, this part is done. I'm just making it a green highlighter. Okay, now let's go and see how do you create a table. So what is a table? So the way I said, a table is nothing but collection of your rows and columns. Okay, so let's go and write the next statement here. Next syntax here. Okay. Okay, so the syntax would be, let me add few spaces here. Okay, and I'm writing the table syntax here. Okay, the syntax is create table. Better to have everything in caps lock because we are beginners to this SQL Server. So it's easy to find out where do we have errors. So the syntax would be create table, table name. Okay, so you need to give a table name, and it always follows with the open bracket and a close bracket. This is how it will work. Okay, now once you're creating a table, what is a table? Basically, a table is combination of your rows and columns. So what you need to highlight it here, you can keep on adding multiple columns. Column 1, then you can have column 2. Okay, then you can have column 3, and this can keep on increasing. So I'll just put it as column n. Okay, so this is a basic syntax of creating a data. After creating a database, how do you create a table? Now there is one more addition here. When you are adding the column, what you need to add? You need to add the data type also. That means you need to specify the data type, whether this column is integer, whether this column is float, whether this column will have a characteristic value, or whether this column will have an integer value. So that is why you need to specify when you're creating a table what kind of a column you are creating and what is the data type this column will hold. Okay, so I'm again highlighting it here. Column 1 with respect to the data type.
column 2 and the data type, then column 3 and the data type once again, and this will keep on increasing. So if I have the nth column, again there is no comma separation here. Just by giving a space, you can add the data type. Okay, now what is a table basically? Again, I'll write the statement here. The create table statement is used to create a new table in a database. Okay, so this is very important. Now, where is the table going to get created? Under the database which we have created. So what was the name of the database? We have the name of the database, we have given it as a test database. Okay, so I'll just write it for you here. So the name here is test database. If somebody wants to give it a name like test underscore database, even that is okay, but there should not be any spaces. Okay, just make sure you can give it training database, radical database, whatever you feel like. It should be user friendly, so that next time when you're coming and checking, you should be able to pick up the database which you have created. So start maintaining it in this particular format. Okay, so these are nothing but the syntax. Okay, and we are just doing it one by one. Now let's go back to the databases. Okay, so what we are going to create is, we are going to create a new table followed by the syntax create table, table name, column 1 data type, column 2 data type, column 3 data type, and so on. Now what do you mean by column 1, column 2, column 3? So let's say if I want to create a orders table. Okay, so for example, let's name the database which we have created. So the database name is test, for example, test underscore database. Why underscore? Because it is like little easy to read. Okay, so this is the database which we have created here. Okay, now what is the table name we are giving? The orders is the table name I'm going to highlight. Okay, now under orders, for example, we are adding multiple columns. So under orders, first column is, let's say, order ID. What will be the data type? See, there are multiple data types which we have in SQL Server, in Oracle Server, in Power BI, in Tableau. So data type, everybody must be aware. We can have a data type in the format of float. We can have data type in the format of decimal. It can be varchar, that is variable character. It can be only char. So varchar and char, they belong to the string family. Then we can have a data type, let's say that can be date. It can be date and time. Okay, let me keep everything caps lock. It will be date. We can have date and time. Then we have date and timestamp. Okay, so these are few of the data types we are going to work on. Okay, so again, I'm putting the name here as data types. Okay, and again, let me do a little bit of color coding here. So this is the color. Okay, so this looks fine now. Okay, now one more data type which we are going to work on a regular basis, that is integer. So what is a order ID? Order ID cannot be a date. It cannot be a character. What are characters? Character is just the name, customer name, then your customer product. These are what? These are all your string values. These are all your characters. So your order ID would be integer. Okay, so this is my first column. I am just putting it here. This is my column number 1. Then we will write the statement for it, actual SQL statement. Order ID is 1. Let's say we have one more column, that is let's say it is my customer name. Okay, now customer name is what? It is a character, so it will have a data type as character. So then I have my column number 2. Now we have order ID. There is some customer who have purchased this order ID, so we can also have a customer ID here. So customer ID, so ID, that means again a integer, so this can be my column number 3. Now we can have one more column, order ID, customer name, and let's say, okay, for now let's keep it simple. Only 3 things we can keep it here, and we can start creating it. So this is the database we have, and let's start building this database. Okay, everybody is clear till here? You're understanding what I'm trying to make you help you create? Yes, ma'am. Yes, others? Okay. Sachin, you're able to do it parallelly? You want me to stop for a minute?
No? Okay. So these are the data types. There are multiple data types, but these are the regular ones which we use when we are working with any project. Okay. There is one more, big int. Okay. So let me just add it here, rather making it there because they are completely different. So I'll remove integer from there and I'll remove begin from there. So these are very regular ones. That is why I've highlighted here integer. Okay. And this is big int. So big int is basically used when you work with the contact numbers. That is, for example, your mobile numbers, your landline numbers. So in that cases, you will be using your big int. Integer, if you want the example, age, it can be your age if you want to put the age, or maybe the, let's say, customer ID, something like that, or order ID. So I'll give you two examples here. This is like your order underscore ID. So in that cases, you will be using your integer. If you have something in the form of MMDDYY, that is date is always having a format. YY, that is year, MMDD. So if you want to add a date, you'll be using a date. If you want to add a date and time, that is YY and and DD, followed with the HH, seconds, minutes, and hours. So this is basically your date and time. String values is, let's say, the product ID, product, not ID, product name, basically. Anything which has characters, product name, it can be your first name, FIRST, first name. Okay, so these will all come under your data type, that is your character. Then you have varchar, same, varchar and char is same, just the limit, the size is different. I'll tell you how. So I can again repeat those two names under the varchar also. Okay, so let me close these brackets which are unnecessary. Decimal, everybody know, any, if the column is holding any of the decimal value, let's say 10.004 comma 56.07, something like this. Okay, and float value will be mainly like your temperatures. You have something in Fahrenheit, that is 10 point, then you have E plus E, something like that, this kind of a numbers. So this will come under your float section. Okay, so I'm just highlighting this section. Okay, so these are various data types which we have in not only in SQL Server, other databases also. So let's say today you and me together, we are taking a training on SQL Server. Again tomorrow, if somebody is coming and telling you, okay, we have the requirement for Oracle Server, so you should be 90%, you should be able to work with that databases also, because there will be a change in look and feel. Otherwise the functions, the concepts, the scenarios, the syntax will remain same. There would be like 7 to 8 syntaxes which might differ, but then the logical thinking, the way the tool works, the way the syntax, it is almost same. So you need not worry at that front. Okay, and the flow, data types, everything remains same. Now what is the second step? Once our database is created, we need to go and create the table. So what is the syntax for creating table? Create table, table name. See, this is how I remember, because I keep on teaching multiple servers, multiple databases. So very simple way I try to keep, I try to make myself understand. What you need to create, I have created a database. What a database will have, start asking question to yourself. अभी हमारा database बन चुका है, अभी database में हमको क्या डालना है? Table डालना है. फिर table डालने के बाद हमको table में क्या डालना है? Rows and column. So see, again a simple example. See, you have taken a land. अभी आपके पास में land है. Land is nothing but your database. अब वो land पे आपको क्या बनाना है? उस लैंड के ऊपर आपको बनाना है, लेट्स से बिल्डिंग बनाना है, या आपको आपका बंगलो बनाना है. सो लैंड इज नथिंग बट योर डेटाबेसेस. आपका बंगलो मतलब क्या हो गया? आपका वो टेबल हो गया. अब बंगलो के अंदर आपको क्या करना है? रूम्स बनाना है, लिविंग रूम बनाना है, आपका मंदिर बनाना है, गैलरी बनाना है, समथिंग लाइक दिस. सो लैंड में आपका हो गया डेटाबेस. फिर वो लैंड के अंदर आपने क्या किया? टेबल क्रिएट किया. सो टेबल इज अ स्ट्रक्चर, डमी स्ट्रक्चर. अब वो टेबल के अंदर आप क्या कर रहे हो? बेडरूम्स, लिविंग रूम्स, बालकनीज, ये सब क्रिएट कर रहे हो. तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ योर रोज एंड कॉलम्स. ओके, नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग टेबल? क्रिएट टेबल, टेबल नेम. अब आपको टेबल नेम क्या देना है? So we have decided the table name as orders. So we will go and add it as orders. So now this will not be followed with a semicolon. See, there is no semicolon here. Okay, wait. Okay,
So there is no semicolon here. So next step would be open brackets. Always make it a point. When you're opening your bracket, at the same time, make it a habit to close it. Because many a times what happens is you open the bracket, you forget to close it. It happens with me also. And then we keep on getting the errors. फिर अगर क्वेरीज बड़ी बड़ी है ना तो एक छोटा सा ब्रैकेट ढूंढने में काफी टाइम इन्वेस्ट हो जाता है. सो मेक इट अ हैबिट व्हेन यू आर ओपनिंग द ब्रैकेट, क्लोज इट एट द सेम टाइम. सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? क्रिएट टेबल नेम. सो वी हैव डन दैट. We have created the table with the name orders, but this is not the complete syntax. You need to add the columns to this table. So what is the first column we have decided? We have decided order underscore ID. Okay, now order underscore ID, what is the data type we have decided? The data type is integer. Okay, separated with a comma. See, you can see in the syntax, every column should be separated with a comma. Very basic mistake जो हर कोई करता है. So tool won't understand. अगर आपने ऐसे ही दे दिया order ID underscore order underscore ID and integer is the data type. Now the second column which we have is customer underscore ID. So the tool won't understand. देखो हमको immediately यहाँ पे error मिल गया. That means you incorrect syntax near customer ID. That means the tool is not understanding. Does he needs to create both of this column together? मतलब दोनों को सम करके बनाना है, कॉन्कैट करके बनाना है, या दोनों को सेपरेटली बनाना है. अभी कॉलम तो अलग अलग ही होंगे ना. सी व्हेन वी आर बिल्डिंग टू रूम्स, उन दोनों रूम्स के बीच में पार्टीशन होता है ना. आपके हॉल में और आपके किचन के जो किचन का जो एरिया है, both of them have a partition. That partition is nothing but your comma separation. So here you will be having a comma separation. Now what is a customer ID? ID is again an integer value. See, when you're purchasing something from a Flipkart, or let's say when you're purchasing something from a pharmacist, हर किसी को एक unique identification मिलता है. Okay, so somebody will get an identification like 101, somebody will get as maybe 502. Just like your Aadhaar card also, everybody's Aadhaar card is different, right? Everybody's Aadhaar card have a different number, different identification. So ultimately what it is a unique identification. So यहाँ पे भी हमारे पास हर किसी का customer ID का unique identification रहेगा. And that is why we have given the data type as integer. Okay, now what is the third column we have? The third column we have here is customer name. Not necessary कि आपको हमेशा underscore देना है. If you are not giving underscore, make sure the letters and the characters are complete. They are acting as complete. Okay, so I always believe in giving underscore so that it is easy to read. Now customer name, it is not an integer. See, here we have decided whatever comes under customer name, first name, last name, product name, they can either be a varchar or they can be a char. So the full form is varchar is variable character, and this is normal character. So we'll go with varchar. So I'll put the data type as varchar, and that's it. We are done with this. Okay, any issues till here? We'll just take this concept and then we'll stop for today. Everybody is clear? Do you want me to repeat any of the point? Creating databases, creating table? No, clear. Clear? Sachin, Shweta, Suhas, Saloni? Yes, please. Yes, ma'am. Because I'll keep giving you assignments. Assignments करने पड़ेंगे और hands on करना पड़ेगा तो ही वो interest आएगा. Otherwise ना फिर then it is just investing your time. I don't want that. है ना? ठीक है? So let's go ahead and create it. Okay? So I'm just selecting it and I'm executing it. You can do a shortcut F5. ठीक है. So now let's read the command. So I don't have, see, there were initially वहाँ पे दो options थे. एक था result, एक था messages. अभी result का tab क्यों हट गया है वहाँ से? Why it is not showing? Because there is nothing to show. Result में हमारे पास कुछ data है ही नहीं ना, इसलिए वो tab हट चुका है. We are only seeing the messages. Command completed successfully and this is the time. Okay? ये आपको हमेशा चेक करना है. अगर आपने ये मैसेज ही आपको नहीं आया and आपने जाके यहाँ पे ऑर्डर्स का टेबल सर्च किया, so it will be of no use. So this is the first identification. That means your query have executed successfully, your statement have executed successfully. And at the bottom, this is known as the status bar. ये status bar पे क्या दिख रहा है आपको? With the green check, query executed successfully. Okay, now अभी ये हमारा 3 चेक हो गया. पहला चेक क्या है? हमने एग्जीक्यूट कर दिया. ठीक है. सेकंड चेक क्या है? आपको मैसेज सक्सेसफुल आ गया. एट द सेम टाइम थर्ड चेक इज यू आल्सो हैव अ ग्रीन टिक व्हिच इज सेइंग क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. अभी फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा? व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज द फोर्थ स्टेप? अभी जाके इसको चेक करेंगे. Create rows. हाँ, whether it is created or not, we'll go and check it. So what we do, अभी हमारे पास ये databases है. You are just doing a simple refresh.
See, refreshing is not needed all the time just because we are into the trial versions na. We preferred refreshing it. Otherwise license versions में we don't need to do it, automatically सब दिखने लग जाता है. So see, we have the table which is saying orders. Okay, तो ये orders वाला क्या हो गया? Okay, let me see, this is the same क्या या कहीं और create हुआ है? ओके करेक्ट. तो अभी क्या हुआ, हमको ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट करना था, बट कैन यू सी वो डेटाबेसेस के अंदर जाके क्रिएट हो गया. व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस? we have the database, the name is test database. Under this test database यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होना चाहिए था under the table section, but what has happened is the tool को समझा ही नहीं कि ये orders का जो टेबल है वो कहाँ क्रिएट करना है. So randomly उन्होंने क्या किया, उस टूल ने जाके databases के सेक्शन में इसको क्रिएट कर दिया. So just to avoid this we have one more syntax. मैंने ये purposely किया है so that I can highlight you one more syntax. We have one more syntax which says use database. अभी क्या हो रहा है, मेरे पास में इतने सारे डेटाबेसेस क्रिएटेड है, सो द टूल इज गेटिंग कंफ्यूज कि ये टेबल को मुझे कहाँ जाके प्लेस करना है, माई कोचेक्स में जाके प्लेस करना है या माई सीक्वल में करना है, माई ट्रेनिंग में करना है. So what we are going to do is we are going to give a command to the database that whatever I am trying to create after this query, जो भी मैं statements लिखने वाली हूँ, वो statements इस database में जाके ही settle होना चाहिए. Now let's see. Use test database. I could have created maybe मैंने यहाँ पे I could have changed my name. Use MySQLDB, my learning, anything. So but just because we are referring to my database, I am clicking on this and I am executing it. Okay, now I will go and fire this query once again. Okay, command executed successfully. Let me just go and refresh it once. So what we need to see is under test database only the orders table should get created. Okay, let me just go and open it once, and under test databases we should have a table of orders. Can you see it now? Forget about this. Can you see the table is created and the icon is different because this is a table and these are databases. See, don't get confused between the icons. You can write it down. जहाँ पे ये glass दिखता है, a glass full of water, that means this is the database. Within the database, you have created a table. अभी table कैसे होता है? Rows and columns. See, if you go to my Excel here, अभी ये table ही हो गया ना आपका basically. ये table में क्या है? This is the column name. These are the rows. Correct? तो उसका structure कैसे हो रहा है? See, if I go to this data creation here, or maybe if you go to this insert, see, this is the table. आपको icon दिख रहा है table का? Can you see this icon? Combination of rows and column. Similar icon you are able to see it here also. Combination of your rows and columns. Now if I go and expand this, there are no tables here. There are no columns here. अच्छा sorry, ये columns का structure, my bad. Columns भी create हो गए, but this is a dummy structure. There is nothing available inside this column. Okay, so how you can go and अभी क्या हुआ है, आपका सिर्फ स्ट्रक्चर बना है. आपको वो स्ट्रक्चर जो बना है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर आपके 3 रोज, अभी वो 3 कॉलम्स, अभी वो कॉलम्स में आपको रिकॉर्ड्स, वैल्यू, डेटा इंसर्ट करना है. सो देयर इज वन सिंपल स्टेटमेंट जिसके हेल्प के थ्रू आप देख सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दिस शुड बी अ वेरी हैंडी क्वेरी एवरी टाइम. ये क्वेरी आपके पास हमेशा होना ही चाहिए आप जब डेटाबेसेस के साथ काम करें, कोई भी डेटाबेस क्यों ना हो, SQL, Oracle, whatever it is. Select star from table name. Okay, so my table name is orders. So once I fire, very simple query, select star from, I'll write it here also. So one simple query which you always need to pay attention is, so this will, it will come before your insert statements. Okay, so I'm going here, I'm just dragging it down. We can just put one more statement here, the third statement. Select star from table name. It can be a table name, it can be a database name, so this can keep on changing. Okay, database name. Okay, now what is the meaning of star? Star का meaning ये होता है, कोई उसको star बोलता है, कोई asterisk बोलता है, one and the same. Star means you want to see all the tables, all the columns of that table. अगर आपने star नहीं mention किया तो I'll tell you कि what is the second way of writing it. Select star from orders. Okay, semicolon यहाँ पे दिया नहीं दिया तो भी चलेगा, your query will execute anyway. Okay, see, can you see the structure? आपको structure दिख रहा है कि इस table में कौन से columns हैं. Got it? Now this is one way of doing it. Second way,
सिलेक्ट स्टार, अभी मैंने स्टार नहीं दिया. स्टार का मीनिंग क्या था? स्टार मीन्स यू वांट टू सी एवरीथिंग फ्रॉम दैट टेबल. अगर सपोज ये टेबल के अंदर जो कॉलम्स है, अगर एक कॉलम में डेटा होगा तो मुझे वो डेटा भी दिखेगा, बट देयर इज नो डेटा, वी हैव नॉट इंसर्टेड एनीथिंग, इसलिए वो अभी टेबल का आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहा है और डमी स्ट्रक्चर. नाउ अगर मुझे एक्सप्लिसिटली उस सिलेक्ट स्टेटमेंट से सिर्फ कस्टमर आईडी ही देखना है, सी I have the customer ID. Okay, let's put it in. It is not case sensitive. आप caps lock small letters में भी लिख सकते हो. There is no worry. Okay, so select customer ID from your orders table. Okay, and again I'm executing it. Suhas, you can do it parallelly. नो मैम, इंस्टॉल नहीं हुआ वो अभी तक. अच्छा हुआ ही नहीं क्या? अच्छा Sachin, you able to you able to understand sequence? आपको समझ रहा है when you executing? है ना? हाँ. Now other than Suhas and Sachin, Saloni, Shweta, you able to catch it? What we are doing? Yes. समझा? दोनों का डिफरेंस समझा? स्टार का और एक कॉलम का डिफरेंस समझा? Yes. Okay. Okay. So I think if others want to take a screenshot, आप इसका screenshot ले लो. You can practice it. और सुहास, you can present me your screen कि कहाँ आपका वो हो रहा है. Okay. Where it is happening. Any issues still here? Clear everybody? Whatever concepts we have covered today. समझ रहे हैं? So tomorrow what we are going to do is we are going to come and start adding data to this table structure. है ना? कल से उसमें डेटा ऐड करेंगे and then we'll start understanding another scenario, another statement. So when you are coming tomorrow, ये queries fire करके ही आना, है ना? तो ही वो next concept ऐसे it will be helpful because everything is linked together, right? Yes. Database create करना, फिर table create करना. अभी use का meaning ऐसा है, if you have only one database, use नहीं किया तो भी चलेगा, but it is a good practice. That is, you're giving a command to the database कि मैंने जो database का table create किया है वहीं जाके बाकी का structure form होना चाहिए. Got it? So that is the purpose of use. So ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है. I mean, not only freshers, there are many experienced people who don't know कि use करके भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, table does not understand कि कहाँ जाके create करना है. Most of the time, if you do not see the table, वो by default system tables में masters में जाके ही create होगा. That is a default place, है ना? See, there are so many default tables already created. But how do we get that table back to the required structure? Use this. ठीक है? If anybody is forgetting to use this statement, तो आपको आपका table कहाँ जाके मिलेगा? Under the system database under masters. Okay? ठीक है? You can take a screenshot of this and you can just keep a note with you. And again, same goes for your this SQL Server also. ठीक है? So see, अभी ये क्या हो रहा है ना, जैसे we are going to be data analysts, we are going to be developers of Tableau and Power BI. So ये हमारा काम नहीं है originally. This is what I mean. Wherever you're working in companies, let's say small scale है, MNCs है, there are proper dedicated database developers who will be helping you to get the tables created because they get the tables from the clients. बट वो टेबल के ऊपर काम तो हमको ही करना है. टेबल में से रिकॉर्ड तो हमको ही निकालना है. अगर आपने डैशबोर्ड पे सपोज एक पाई चार्ट बनाया, एवरीबॉडी नोज अ पाई चार्ट. एक पाई चार्ट में आपने दिखा दिया कस्टमर नेम एंड द प्रोडक्ट्स परचेज बाय द कस्टमर नेम. सी आई राइट इट डाउन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैंने एक पाई चार्ट बनाया है. ओके, और लेट मी गो बैक टू दिस शीट. Okay, so I have created a pie chart here. In pie chart, what I'm showing the customer name plus the sales. मतलब एक कस्टमर से हमने कितना अर्निंग किया है. फॉर एग्जाम्पल सुहास ने कुछ 2 चीजें परचेस की. I have earned 100 rupees. Okay, रुचिका have purchased maybe one laptop. I have earned 40,000 rupees. So वो चार्ट में क्या दिख रहा है आपको? पाई चार्ट में कस्टमर नेम एंड द सेल्स, और सेल्स बोलो या मे बी प्रॉफिट, वट एवर यू फील लाइक. What is the profit my company have earned? So ये आपने जब चार्ट दिखाया ना, चार्ट is ready. But if you want to go and check whether जो भी कस्टमर नेम्स जो मुझे डेटाबेस में आए हैं क्लाइंट के साइड से, 10 कस्टमर्स आए फॉर एग्जांपल,
10 के 10 कस्टमर्स के नेम करेक्ट दिख रहे हैं और 10 के 10 कस्टमर्स का जो टोटल सेल है, टोटल अर्निंग्स, फॉर एग्जांपल 10 लोगों का मिलके जो सेल्स मैंने किया है, आई हैव अर्न 1 लाख रुपीज। सो अभी ये करेक्ट है या नहीं, मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा? आई हैव टू कम टू माई डेटाबेसेस, या आपका डेटा अगर एक्सेल में आ रहा है, किसी और डेटाबेस के टूल में आ रहा है, सो यू हैव टू कम एंड फायर द क्वेरी हियर, सिलेक्ट कस्टमर नेम। आपका क्या होगा क्वेरी उस केसेस में? यू हैव टू फायर द क्वेरी हियर, सिलेक्ट customer name, then sales हो, profit हो। currently we don't have a sales column, from the table, आपका जो भी टेबल होगा, ऑर्डर्स टेबल। सो ये आपको फायर करके आपको ज्वाइन कंडीशन यूज करना पड़ेगा। आई विल टेल यू अबाउट ज्वाइंस इन द लेटर सेक्शन। तो आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करके ये डिटेल्स निकाल के यू कैन गेट द रिजल्ट। ओके, देयर आर 10 कस्टमर्स और वो 10 कस्टमर्स का सेल एक्चुअली 1 लाख रुपीज बैकएंड में दिख रहा है, 10 कस्टमर्स, एंड द अर्निंग इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। ये आपका डेटाबेसिस का और फ्रंट एंड, जो रिपोर्ट को हम फ्रंट एंड बोलते हैं बेसिकली। रिपोर्ट इज नथिंग बट योर फ्रंट एंड एंड डेटाबेस इज योर बैक एंड। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज मैच होना चाहिए, तब ही आपका वो रिपोर्ट सक्सेसफुल है। एंड फॉर दिस पर्पस वी नीड टू हैव द नॉलेज फॉर डेटाबेसिस। अभी समझा कि क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज डेटा क्लाइंट का एक्सेल में नहीं आता, बिकॉज एक्सेल डज नॉट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी टू होल्ड द डेटा फॉर 2 years 3 years। डेटाबेस में यू कैन कीप द डेटा फॉर आप 10 साल का, 15 साल का डेटा रख सकते हो। दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू ओनली सेल्स। आप फाइनेंस का अलग डीबी बना सकते हो, है ना, जैसे भी मैंने आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास में अभी ये स्ट्रक्चर है। सो लेट्स से दिस इज माय फाइनेंस डेटाबेस, दिस इज माय सेल्स, दिस इज माय मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल। सो डेटाबेस में इतना कैपेसिटी है, इट कैन होल्ड डेटा फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट। आपके जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड वो डेटा होल्ड करके it can have the data within every database structure 10 years 15 years। so database is also known as a place which will hold the data, latest data, also the historical data। ठीक है, अब मैंने जैसे ये पाई चार्ट बनाया, बिफोर आई गो टू द क्लाइंट आई विल हैव टू डू अ टेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा ना, कि अब क्लाइंट बोल रहा है 10 कस्टमर्स से मैंने 1 लाख रुपीज अर्न किया है। सो इज योर रिपोर्ट शोइंग द सेम वैल्यू? सो व्हाट यू विल डू, you will come to databases and then you will check these values। Okay, clear till here? Yes. Okay. So we'll take it forward from tomorrow. Everybody, please try to join at least by 7:35 tomorrow, so that we cover what is planned for the day, and you don't miss out actually, है ना? Because I will start on time, because the session is planned only for till 8:40, तो वो meeting automatically end हो जाएगा, है ना? So at least join by 7:35, so that even if you're joining late, you don't miss on anything। अगर आपको कल के कंसेप्ट में कुछ इश्यूज है तो हम इनिशियल 10 मिनट हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना? सो प्लीज बी ऑन टाइम। सुहास, क्विकली शेयर योर स्क्रीन, क्योंकि मीटिंग में एंड हो जाएगा 5 मिनट में। हाँ, सो फ्रॉम टुमारो आई स्टार्ट गिविंग यू असाइनमेंट। आज थोड़ा लाइट रखते हैं। ओके सुहास। हाँ, ये दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एडिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, इंस्टॉल एसएसएमएस नहीं करना है हमें, डायरेक्ट कनेक्ट ना करो तो ओके। फिनिश का ऑप्शन आना चाहिए इसके बाद में। ओके, नो, ओके, क्लोज इट, नहीं। अच्छा, देयर इज नो ऑप्शन टू, ओके, गो टू कस्टमाइज। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया आपका, बस एक फिनिश ऑप्शन आना चाहिए। हाँ। आपको डॉक्यूमेंट मिला ना सुहास? हाँ, मिला मुझे। उसमें एक बार स्टेप चेक करना, तो यहाँ पे फिनिश यहाँ पे आता है कि इसके बाद के स्टेप में आता है? ठीक है। हाँ, एंड और किसके पास में नहीं है इसका सेटअप? सलोनी तुम्हारे पास नहीं है ना? सलोनी, श्वेता? नो मैम। तो मुझे क्विकली आपका मेल आईडी दो, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। अभी सबके नाम ऐसे स्टार्ट हुआ है, थोड़ा एक राइमिंग हो गया मेरे लिए। सुहास, सचिन, सलोनी, श्वेता। ओके, 1 second ना। सलोनी, टेल मी योर मेल आईडी। मैम चैट बॉक्स में लिख दूं? ठीक है, डाल दो। थैंक यू। श्वेता, यू ऑल्सो डू द सेम थिंग एंड हेल्प मी। हाँ, अभी करो नेक्स्ट, यूज माइक्रोसॉफ्ट टू चेक द अपडेट्स। हाँ, ठीक है। Okay, Shweta, thank you. Thank you, Salome. Let me get it saved.
What about you, Sachin? You able to fire the query? आपका बना है? मैम Yes. मैम आज हम लोगों ने मतलब तीन क्वेरीज देखी है. Correct. ओके. हाँ. तो आपने फर्स्ट क्वेरी पहले लिखी है एंड बाद में एग्जीक्यूट की है. Correct. हाँ. तो हम लोगों ने मैम डेटाबेस क्रिएट किया है, टेबल क्रिएट Next. किया है, उसमें Correct. कॉलम्स क्रिएट किए. तो मैम हम लोगों ने डायरेक्टली उसको तीनों पहले मतलब तीनों क्वेरीज एक साथ लिख दी और एक साथ एग्जीक्यूट कर दी, तो वो वर्क करेगा? Okay. Good question. I don't know who is speaking. सलोनी बात करी है श्वेता? या मैम सलोनी. सलोनी देखो, अगर हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस सिलेक्ट स्टेटमेंट रहेगा ना, मल्टीपल सिलेक्ट. हाँ सुहास, नेक्स्ट करो आप. प्रोडक्ट की नहीं देना है आपको, ये आपका फ्री वर्जन है. हाँ. तो देखो श्वेता, आपके पास अगर ना सपोज सिलेक्ट स्टेटमेंट है, आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हो. सुहास एक मिनट, प्रेजेंटेशन बंद करो. हो गया आपका इंस्टॉलेशन? यू क्लोज इट, मैं इसको दिखाती हूँ क्विकली. ओके. वेरी गुड क्वेश्चन. सो देखो अभी मैं, वी हैव ओनली 2 minutes लेफ्ट. लेट मी सी. अभी दिख रहा है आपको डेटाबेस? यस मैम. सलोनी हाँ, अभी देखो. अभी लेट मी राइट इट. Oh God, the insert statement is there. So see, you cannot execute multiple create statement, but you can execute multiple select statements, है ना? Okay, see देखो अभी मैंने ये दोनों को साथ में execute किया. ठीक है, दोनों साथ में चल गई. Now I need to do it one by one. ये एक ही साथ में करनी पड़ेगी. देखो ना मेरे एग्जाम्पल देखो ना, वो जब तक आपके पास में लैंड नहीं है, आप लैंड पे बिल्डिंग कैसे बनाओगे? सब साथ में कर सकते हैं क्या आप? हाँ, आपके पास जब लैंड बन जाएगा, सी देयर आर 4 लैंड, आपको कोई एक लैंड परचेस करना पड़ेगा ना, है ना? जब तक आप लैंड को परचेस नहीं करोगे, आप कहाँ जाके आपका बिल्डिंग बनाओगे? सो यू हैव टू परचेस द लैंड. दैट मींस आपको पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा. वो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको उसमें कितने रूम्स बनाने हैं, वो रूम्स का साइज कितना होगा. समझा अभी, है ना? बट अगर आपको वो रूम्स का एक्सेस करना है, जैसे ही आपका लैंड रेडी हो गया, आपका बिल्डिंग रेडी हो गया, आपके बिल्डिंग में मल्टीपल रूम्स रेडी हो गए, अब आपका घर है वो, अब आप जाके कैसे भी एक्सेस करो. आप बालकनी में बैठ सकते हो, आप लिविंग रूम में बैठ सकते हो, आप बेडरूम में बैठ सकते हो. तो एक्सेसिंग इज नथिंग बट योर सिलेक्ट स्टेटमेंट. आप यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग ना. अब वो आपका घर है, यू हैव इन्वेस्टेड देयर, यू कैन सिट इन बालकनी, यू कैन सिट इन बेडरूम, हॉल, एनीथिंग. सो ये एक्सेसिंग इज सिलेक्ट. यू कैन डू मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट साथ में. आप एक मल्टीपल इंसर्शन भी कर सकते हो, बट जहां पे भी क्रिएट की बात आती है ना, आपको एक ही करना है वो. समझा? यस मैम. है ना? ठीक है. ओके. हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस? कीप आस्किंग क्वेश्चंस. सिली क्वेश्चंस हो, सिंपल हो, उससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा. Others will also get to know the inside. Okay, so keep asking this way, because यही questions आपको इंटरव्यू लेवल्स पे आते हैं. ऐसे ही they'll try to manipulate you. ठीक है? Okay, shall we wind it up, or any questions you have? Okay, let's wind it up. Make sure we have at least ये तीनों चीजें कल रेडी करके आओ, and then we'll go to another concept. थोड़ा इसको ट्रिकी बनाएंगे, one day by day. Okay, ठीक है? Okay, thank you so much for joining in. Have a good day.